by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की और उसके हमारे साथ हैं उसके लिए हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जी डॉक्टर नबील अहमद, और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और बात अभी आप जो अभी लास्ट हमारी कॉलर थी उनसे आप बात कर रहे थे तो जी उनकी मेरा ख्याल है वो जो हम समरी नहीं पे बात नहीं कर सके, अगर वो अभी भी सुन रही हैं तो उनको ये करना चाहिए कि 3-4 महीने पहले एक्सरसाइज करें, वॉक करें और किचन में ये सारी चेंजेस लेके आएँ और अपनी डाइट बिल्कुल सिंपल करें। फिर 3-4 महीने के बाद अपने जीपी से दोबारा अपने लेवल चेक कराएं। अगर लेवल 6.8 से उनके नीचे आ जाएं तो फैंटास्टिक, फिर उनको स्टैटिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन अगर उनके लेवल्स जो हैं परसिस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे एलडीएल का लेवल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो फिर उसके लिए उनको स्टैटिन शायद लेना पड़ेगी। ये एडवाइस बहुत आपने इसलिए क्लियर करके सिंपलीफाई करके बताइए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Hello? We are here listening to you. Hello? Okay. Now, I have a simple question. I don't have any heart problem, but it's a family history of heart disease. And one person passed away as well. Now, I have a little breathing problem. Is that connected with the heart disease, or I had the ECG done, there was nothing wrong with it. Right. Now, doctor is refusing to go any further. Could it be possible to have a heart disease or not? Or what one can do? Thank you for your call, I just wanted to know, does she get breathless? Do you get breathlessness when you walk or when you do some kind of activity? Not all the time. Not all the time. Yeah. Okay. Okay, so what's your age, ma'am? Occasionally. What's the age group? What's your age group? 60. Okay. And no disease, no blood pressure, no sugar, nothing at all. And cholesterol, is it okay? Cholesterol is 4.5. 4.5. That's very good. And I suppose you're a non-smoker? Yes. Okay. So I think that's why आपके GP जो हैं वो ज़रा reluctant हैं कि आपके risk factors नहीं। तो होता क्या है कि जी हम प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी एक चीज़ है, या फ्रेमिंगम रिस्क स्कोरिंग है, क्यू रिस्क स्कोरिंग, सो बहुत सारे रिस्क स्कोरिंग टूल्स हैं जो जीपीज यूज़ करते हैं। उसमें फिर एज, मेल फीमेल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए तो एक आपका एक रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। तो आई एम थिंकिंग कि आपका जो आपने बताया है वो रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बड़ा लो है। और एंड सेकेंडली द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर कॉन्वर्सेशन जो अभी आपकी हमारे साथ हुई है वो है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री को भी थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं अपने बाकी व्यूअर्स के लिए कि फैमिली हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो वी स्ट्रिक्टली मीन पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट अंकल्स एंड आंटीज एंड नॉट ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स। तो सिर्फ हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेरेंट्स पे एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे। और प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हम बात करते हैं तो अगर मेल्स में अंडर द एज ऑफ 60 एंड फीमेल्स में 65 तक हम जो समझते हैं कि प्रीमेच्योर है जी। अच्छा। तो वो प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री होगी। तो आई थिंक अगर आपको एंग्जाइटी थोड़ी बहुत, वैसे कोई स्ट्रेस लाइफ में सबके आजकल तो थोड़ी बहुत होती, उससे अगर सांस फूल रहा है, फिर आपका एनीमिया तो नहीं है कहीं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, एस्थमा की हिस्ट्री तो नहीं है, तो ये तो बैठ के पूरा इनकी एक कंसल्टेशन बनती है जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएं केयरफुली। और अगर शक पड़े ज़रा सा भी तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए सोचना चाहिए। तो वैसे आप कह रहे हैं कि हार्ट जो डिजीज है उसकी रिस्क उनका मिनिमम इनका आपका मिनिमम है, लेकिन यू नेवर नो, समटाइम्स एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं तो वो बड़ी एक सरप्राइजिंग होती हैं। अच्छा, तो एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Can I speak in English? Yes, of course. Why Okay, not? unfortunately I lost my brother at the age of 61 3 weeks ago. We are sorry to hear that. He passed away with an aneurysm of the abdomen. Yeah. He had a rupture. He had been perfectly fine, and unfortunately his time was up and nothing could be done.
He passed away in the ambulance heading to the hospital. Even the paramedics had thought that there was nothing other than just a kidney infection, so they had just given it a priority 2 on the ambulance, but such as such. I'm just checking. Obviously, I understand that this could be a hereditary problem with regard to the aneurysm of the abdominal. I have had an ultrasound scan in the last 1 week, and it did come out as at 1.8 centimeter, which I'm told is quite normal. I am a diabetic, type 2. I do, of late, suffer from slight cramping, especially while sleeping, in one of my legs, and it's regular there. And of late, I have had a little bit of dizziness, not collapsing, but just losing balance, if I could explain it in the right way. I was just wondering, obviously, I would like to have my tests done. My cholesterol is fine. My blood pressure is fine. There is a little bit of protein in my kidneys, but I've had medication to hopefully rectify that. I'm just wondering if there is anything with regard to hereditary problems that people should be made aware of by the doctor with regard to aneurysm of the abdomen, because apparently there is no diagnosis or symptoms, and it can be very fast occurring, and most of it are fatal. And I was just wondering if the doctor could let people and viewers know that they should get that checked. I know there's a scanning program after 65 years of age, but I'm currently 56, so concerned, obviously the family's concerned to have myself checked out. If the doctor could let me know, please. Thank you very much for your call. First of all, we are really sorry to hear about the death of sad news about your brother. But I think when your time is up, it's up. There are few circumstances in life you can't help. But thank you very much for bringing this abdominal aneurysm into this picture of vascular disease. It is not very common. And I think you have taken the right steps. You're heading in the right direction. You have got your scanning or ultrasound scanning of your abdomen. I think that should be the first step. And you have partly answered your worry and your query already by saying that yes, there is a scanning or screening program after the age of 65, which is it is provided by NHS, but it can be too late for some people. So I think partly now I will start speaking in Urdu as well for some of our viewers. तो करना यही चाहिए इनको कि जो डायबिटीज़ है वो डायबिटिक कंट्रोल आपको बहुत अच्छा एंड बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, ब्लड प्रेशर इज़ अ बिगेस्ट किलर. तो ब्लड प्रेशर अगर आपका ठीक है, वी हैवंट एक्चुअली यू हैवंट मेंशन्ड दैट यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल. तो लेकिन होता क्या है कि जो डायबिटिक होते हैं उनमें हम स्टैटिन एज ए प्रिकॉशन भी दे देते हैं अगर उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा ना भी हों. और फिर एक तो ये बड़ा इन आपकी हिस्ट्री में आई थिंक वी हैव टू क्लैरिफाई वेदर यू आर ऑन एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड एंटी लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन. And the most important thing you have asked is that should you be really worried about any future possibility of having coronary artery disease or cardiovascular disease that we have been discussing this morning. So I think what you need to do is get yourself referred to a cardiologist if you are really worried, and then we can do a CT coronary angiogram along with CT of your aorta. So we can actually outline properly, thoroughly, without any doubt, and we can look at the whole of your aorta rather than just the abdominal aorta, and obviously you will have more peace of mind. Yeah. And for general viewers, I think we should not be getting worried unnecessarily. But the most important thing is to have a health check. If the blood pressure is high, it should be dealt with on time, and it should not be delayed. I know most of our callers
they are reluctant in taking any medication. And thank you very much for bringing this to attention of lots of our viewers, that sometimes you have to take medication. It is important from every aspect. Yeah, again, depending on your circumstances, your age group, and your history, medical history, of course. So everybody has their own family history and your own medical history. So, so generally speaking, I think it's very important that the health screening is very important. So cholesterol should be checked and blood pressure should be checked. If somebody is smoking, should stop smoking. If somebody is diabetic, some lifestyle changes, dietary changes. तो ये तो बहुत ही important area आपने जो है highlight किया. Thank you very much for your call once again. Thank you. And we have another caller online. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैं डायबिटिक है मुझे, और मेरी ना एक बाजू जो है वो कमज़ोर हो रही है. दूसरी बाजू से वो थोड़ी सी सूख गई है और दर्द कर रही है. अंदर से कुछ दर्द भी है और ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है. तो डॉक्टर को बताया था तो वो कहते हैं शायद डायबिटिक की वजह से हो रहा है. अच्छा. फिर जी, आपकी एज ग्रुप क्या है? वो 40. ओवर 40. अच्छा, तो इससे अच्छा ठीक है. और कोई ऐसा कोई सिम्टम है, कोई ऐसी और है इलामत जो आप बता सकती हो, कि कोई और सिम्टम्स ऐसे और आप बता सकती हैं? कुछ और क्या कुछ फील होता है कि आप डायबिटिक हैं? डायबिटिक हूँ और रात को सोते हुए मेरे एक बाजू जैसे झटका लगता है बाजू से सोते हुए, और मैं उठ जाती हूँ और फिर जब सोने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी बाजू या दूसरी टांग के ऐसे लगता है. तो इस तरह मेरी बॉडी के सब पार्टों से ऐसे झटका लगता है. जी, आपको डायबिटीज कितने सालों से है? जब मैं सोना चाहती हूँ तो सो नहीं सकती. कई बार मेरे 1 घंटा डेढ़ लग जाता है सोने में. तो जब मैं डीप स्लीप हो जाती हूँ तो फिर ठीक हो जाती है. आप जरा थोड़ी तवज्जो दीजिए. आपकी डायबिटीज कितने सालों से आपको? मेरी 13-14 साल से मैं मेडिसिन. जी, आप इंसुलिन लेती हैं? नहीं, मैं टैबलेट लेती. अच्छा, आप टैबलेट्स पे हैं. ओके, तो ब्लड प्रेशर ठीक है आपका? जी. और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वो भी ठीक है. जी. अच्छा, तो देखें जो डायबिटीज इतने सालों से, और आपका कंट्रोल कैसे है? आपके पास घर में ग्लूकोमीटर है, आप चेक करती हैं? जी, मैं चेक करती हूँ. तकरीबन सुबह 8-9 पे होती है, खाली पेट होती है. ओके, ये थोड़ी सी बॉर्डर लाइन जरा सी आपका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है. आप मेरे ख्याल थोड़ी सी, मुझे जनरली जरा आपका मोरल लो लग रहा है. आपको जिस तरह बाजुओं में दर्द हो रही है और आप थोड़ी सी अनवेल हैं. आपको एक थॉरो चेकअप की ज़रूरत है. आप जीपी से जाके कहें कि आपके कुछ हो सकता है एक्सरेज की ज़रूरत हो नेक के, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, जिससे ये बाजुओं में इस तरह की सिम्टम्स आ जाती हैं. और फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बड़ी कॉमन है. और आपका डायबिटिक कंट्रोल को मुझे बहुत अच्छा लग नहीं रहा. मेरा ख्याल है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा पहले से, और थोड़ा सा ज़िंदगी में वापस आना पड़ेगा. आपकी आवाज़ बहुत डिप्रेसिंग सी लग रही थी मुझे. हाँ, तो लगता है जैसे बड़ी पेन में है या बड़ी मायूस हो गई हैं जिस तरह. अभी तो कुछ भी नहीं, आपको तो बहुत अभी जीना है, बड़ी दूर जाना है, बड़ा सफर लंबा है आपका अभी. तो अभी से थकावट महसूस हो रही है आपकी कॉन्वर्सेशन में. ये होता है कि इंसान डिप्रेस होने लग जाता है जब उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है. जैसे आप डॉक्टर को कह रही हैं, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा तुम डायबिटिक हो, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग. बट देयर शुड बी जी, डिप्रेशन इज वेरी कॉमन. जी, वेरी कॉमन. डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट्स अगर जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो या डायबिटीज हो. वो ये समझते हैं कि बस अब तो गई जिंदगी, अब बस बैठ गए, अब तो खत्म हो गया, ये तो एंड हो गया. अब एक्चुअली वहां से तो लाइफ शुरू होती है, वहां से तो चैलेंज शुरू होता है. थोड़ा सा चैलेंज है. हाँ, बिल्कुल. तो एक और मेरे ख्याल कॉलर है हमारे साथ, और फिर हमारा टाइम भी हो जाएगा जाने का. जी हाँ, हेलो. हेलो जी, वेलकम टू द शो. गुड मॉर्निंग. डॉक्टर से ये पूछना चाहता था, मेरा अभी रिसेंटली बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो जाता है, कभी पोस्टल हाइपरटेंशन भी हो जाती है. तो उसके बारे में कोई मशवरा दे सकते हैं? अच्छा जी, आप सबसे पहले तो अपना ख्याल करिए. अपनी फ्लूइड इनटेक जो है वो
वो मुनासिब रखें आप। मेरे ख्याल अगर आप जरा सी डिटेल में जाएंगे तो हम ब्रेक के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल हम लास्ट उस पर आ गए और आपके पास वैसे ही हमारे पास कॉलर वी आर inundated with calls, so I think we'll just take a break and after the break you can carry on with your questions. और इसके अलावा भी हमारे जो सोशल सेक्शन होता है, इमोशनल सेक्शन होता है, वो भी हमारा, उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट साथ होंगी, so stay tuned. The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.